Hello student, today we are going to learn standard 8 second chapter 1.2 Dick Whittington and his cat. So let's start the chapter. This chapter is divided into 4 parts. So this is first part of the lesson. So let's start. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. He had no proper home, for both his parents and had died, and he was unkindly treated by many of the villagers. There was a boy who was poor, and his name is Dick Whittington, and he lived in a small village in the south of England, and also he had no home, or his parents were died, and because of poorness the people of the village were treated him unkindly. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the street. For he thought people might treat him more kindly if he were rich. So one day, Dick overheard that. Overheard means सुना था. Someone says that street of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once. The streets means रास्ता, वे. सो इंग्लैंड की जो रास्ते हैं उन पर उस गोल्ड की बनी होती है, उस पर गोल्ड होता है, सोना होता है. So he decided that he would go there and pick his fortune and gold pieces from the street. And he also thought that because of people were not treated well with him, so he thought that if I were rich, people treat with me kindly. Next passage. So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a car stopped and asked him if he was running away from the home. वो जा ही रहा था कि रास्ते में एक कार्टर मीन्स एक घोड़ेसवार आया और उससे पूछा कि घर से भाग रहे हो. सो ही सेड दैट आई हैव नो होम. डिक ने कहा मेरे पास होम नहीं है. आई एम ऑन माई वे टू लंडन टू फाइंड माई फॉर्चून. मैं लंदन जा रहा हूँ मेरा फॉर्चून ढूंढने के लिए. आई एम गोइंग टू लंडन माई सेल्फ सेड द कार्टर ऑल्सो सेड दैट आई एम गोइंग टू लंडन माई सेल्फ. जंप अप हियर, बैठो यहाँ बिसाइड मी, एंड वी विल जर्नी टुगेदर, और एक साथ चलते हैं. दे अराइव इन लंडन जस्ट बिफोर नाइटफॉल पड़ने से पहले ही वो, मतलब अंधेरा होने से पहले ही वो लंदन पहुंच गए. एंड द कार्टर लेफ्ट डिक. कार्टर ने डिक को वहाँ छोड़ दिया रास्ते पे, लंदन के स्ट्रीट पे. एंड मेड हिज वे टू एन इन. और वो इन यानी एक स्मॉल होटल होता है जहाँ हम रेस्ट कर सकते हैं. सो वो इन पे चला गया. पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक अराउंड हिम इन दिस में. वो डिक ने हियर देयर देखा, सो वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया. हियर द डिसमे मीन्स डिसअपॉइंट. सो वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया. वेयर वॉज ऑल द फाइन गोल्ड. तो यहाँ तो गोल्ड नहीं है. वॉट आई वॉज ओवर हर्ड एंड वॉट हियर. All he could see were dirty street थे. Lots of unfriendly people they who were not behave kindly with him. He had nowhere to sleep. So उसको सोने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी, रात हो रही थी तो. And in the end he spent the night in the corner of an alley. Here the alley means narrow passage between or behind building. बिल्डिंग के पास एक नैरो पैसेज होता है छोटा सा. सो वहाँ वो सो गया. वुड कम टू नो हार्म, जहाँ कोई उसे हार्म ना पहुँचे, इस ऐसी जगह वो सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री. नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और जब डिक उठा सो उसे बहुत ठंड लग रही थी, एंड ही वॉज वेरी हंग्री. ही वांडर अराउंड बेगिंग फॉर अ फूड.
वो इधर उधर वांडरिंग कर रहा था, मतलब ढूंढ रहा था, फूड ढूंढ रहा था खाने के लिए कुछ. बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, बट पीपल शाउटेड एट हिम स्क्रीमिंग हिम, गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ मी, बी ऑफ विथ यू. और उसे मतलब हकल रहे थे. एंड एम एंग्री बो ब्लोज एट हिज हेड, और उससे उसके हेड पर कुछ लोग बीट भी कर रहे थे, मतलब मार भी रहे थे. एट लास्ट ही कोलैप्स इन द स्ट्रीट एंड लेड देयर टू वीक टू लुक फॉर फूड. सो उसने कुछ खाया नहीं था, तो वो ऑब्वियसली वो वीक हो गया था एंड उसे कुछ शायद डिजीनेस फील होगा. सो वो गिर गया स्ट्रीट पे, वही गिर गया और लेदेस मीन्स वही लेटा रहा. By chance, Dick had fallen in the front of house belonging the rich merchant called Mr. Fitzwarren. और बाय चांस वो किसके किसके घर के आगे गिरा था? मिस्टर मर्चेंट, एक रिच मर्चेंट था, एक बहुत ही श्रीमंत, बहुत ही रिच मर्चेंट था मिस्टर फिट्जवैरन, उसके घर के सामने ही वो गिरा. द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे. एक कुक थी, वो उसे मतलब भगाने की ट्राई कर रही थी, भगाने के लिए डिक को. व्हेन मिस फिट्जवैरन रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप, बट तभी मिस्टर फिट्जवैरन रिटर्न हो रहे थे अपने घर की तरफ. ही स्टॉप एंड सेड टू डिक, व्हाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड. और फिट्जवैरन स्टॉप एंड आस्क्ड टू द क्वेश्चन टू डिक, व्हाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड. तुम्हें फूड चाहिए तो व्हाई डोंट यू वर्क. सो डिक आंसर, आई वुड वर्क, मैं वर्क करना चाहता हूँ, बट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू. बट मैं किसी को यहाँ जानता नहीं हूँ जो मुझे वर्क दे. Okay students, so this is the first part of this chapter.